session is about transforming agricultural value chains via digital collaboration. This session is fourth session, transforming agricultural value chains via digital collaboration. और इसके लिए जो है, I would like to invite Fida Muhammad, the country program officer Asia and the Pacific Division ICO Pakistan, to chair this session. Please come on stage. Executive Director, Strategy and New Initiatives, Salam Takaful, Mr. Sayyid Nayar Hussain, please come on stage. Heading Marketing and Digital for Vegetable Seeds-Based Business, Syngenta, Mr. Faizan Siddiqui, please come on stage. Founder and CEO, Kalam Forest Solutions, Rosina Soleha, please come on stage. And CEO Asia Insurance Company Limited, Zainul Haq Qureshi, please come on stage. Thank you so much. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon and Assalamu alaikum. I think this is an important session. The title, as it says, Transforming Agriculture Value Chain Through Digital Collaboration. First of all, I congratulate the organizers to organize such an important discussion and to take this innovation to organize it in Ramadan. And to all the participants of this panel who are having to be expressing their views between now and the iftar. So it's a challenge to keep the audience engaged and to get across our thoughts. Looking at the so this is a request to the worthy panelists. I would just try to be very brief and to draw the attention of the panelists and also the participants towards the agriculture value chains and the state of the agriculture sector today. If we look at the agriculture value chain, we clearly see that we have a number of failures in terms of providing safe and nutritious food to the consumers, especially the poor segments of the society. And this is not only in the urban areas, but also in the rural areas where the commodities are actually produced. So first of all, I think the agriculture value chain has to drive its energy from the fact that it has to provide safe and nutritious as well as affordable food to the poor segments of the society. Another growing concern is the increasing concentration of power within the value chain. And if you look at the agri-value chain, this power dynamics is clearly in the disadvantage to the farming communities, which is the extreme lower part of the pyramids. The third most important fact is that today we see increasing degradation to the natural resources, and this is because of not only the over-exploitation of the resources, but also the hazardous pressure of the climate change. So the third and linked to it is the poverty and inequality that exist in the rural areas where agriculture is the main activity, which also is one of the consideration if we think about transforming agriculture value chains. Now, looking at the agriculture sector of Pakistan, we see that it's a predominantly smallholder agriculture, and the challenge becomes enormous
for the private sector to actually reach out to them and to engage with them in terms of a positive collaboration, profitable collaboration for both the producers and also the other agriculture value chain actors. Now, coming to what actually the rural people or farmers need, I tried to group it into 4 different paradigms. The first one is the requirement of the agriculture sector, primarily the farmers, and focusing on the smallholder producers. They need more direct access to the market. And this includes access to the input market, but also access to the output markets. The second major driver would be access to financial and economic services. And that is also one of the challenges that we see today in the sector. The third one is access to technology and innovation, and allied to that is access to information, advisory services, etc. And the fourth area that I think that I would request the panelists to reflect on is the resilience to climate change and climate-related, economic and health-related risks and shocks. So with this, I would switch to the panelist, and I would try to organize ourselves in a manner that we complete the session well before the closing session and the aftar. So starting with our friend from Syngenta, what is actually like the or the bottlenecks preventing the offtake of technology and technological innovation, but more with respect to the first topic, which is the access to more direct access to markets. Over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much to the organizers. I will not be taking much of time because Ramadan mein kareeb aa raha hai, time aa gaya iftari ka bhi, so I hope you're all awake. I think first of all, this topic mein hum baithe hain, it's important to understand what is value chain. Value chain mein included kya hai? Value chain is a very diverse phenomena. इसमें सारे आपके downstream players, input providers, banks, processors, and most importantly जिसको टच नहीं किया और हम fintech providers जितने भी हमारी discussion हुई कि हम कह रहे हैं यार आर्थिक impact minimize किस तरह कर सकते हैं. For me it's different. For me it is कि आर्थिक को आप ecosystem में include किस तरह कर सकते हैं, because he is like a family to a farmer और उनकी पाकिस्तान की economy और पाकिस्तान के farmer की well-being में contribution है. तीसरी चीज़ अब ये है कि व्हाट इज़ द FAO फ्रेमवर्क. हमारा जो कंट्री प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है उसकी 3 मेजर चीज़ें हैं. उसमें एक ज़ीरो हंगर है, फूड फॉर ऑल है, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है, एंड उसमें है कि हाउ डू यू ग्रो वर्टिकली विद लेसर लैंड, बिकॉज पॉपुलेशन आपकी ग्रो कर रही है एंड मॉडर्नाइज प्रैक्टिसेस में हम नहीं जा रहे. फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू अस, बिकॉज मैं वेजिटेबल सीड्स सेगमेंट को देख रहा हूँ, तो प्राइमरीली हमारा सारा ताल्लुक जो है वो स्मॉल होल्डिंग फार्मर से होता है. नंबर वन फ्यूचर की नीड क्या है? यू गो ऑन मॉडर्नाइज प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल वन प्रैक्टिस हाइड्रोपोनिक फार्मिंग. आप बजाय लैंड में हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करने के लिए ऊपर वर्टिकल चले जाएं आप. उसमें बड़ी एक्सपेंशन बड़े अच्छे तरीके से आ रही है विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी. देन देयर इज ड्रिप इरिगेशन. उसके अलावा अगर आप देखें तो देयर इज ऑल्सो हेल्दी यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. अभी डॉक्टर फवाद इससे पहले पैनल में थे. Right now what we are doing, unfortunately we are only selling what we are producing in our country. Fertilizers में अगर बात की जाए तो बैलेंस न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया जा रहा. आप जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं, इन ईजी वर्ड्स ले, मैं जिस तरह समझाने जाते हैं, आपको बीमारी होती है, आपको वो जेनेरिक टैबलेट नहीं देते, आपके टेस्ट करवा के उसके मुताबिक आपको चीज़ें देते हैं. तो द सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सॉइल को एक्चुअली चाहिए क्या. देर आर अदर दैन यूरिया एंड नाइट्रेट बेस्ड फर्टिलाइजर्स. कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर सॉल्युबल आपको चाहिए. एंड FFC इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन दैट, क्योंकि उनकी मोबाइल बेस्ड लेबॉर्ट्रीज हैं. हमारे किसान को फिनटेक से लोन से पहले बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ वी नीड टू नो कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं किसान की अपलिफ्टिंग के लिए. एंड देन डू नॉट चैलेंज द आरती. ही इज़ योर पार्टनर. ही शुड बी इंक्लूडेड इन ऑल द डिसीजन मेकिंग.
सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब वी वर इन अ सेशन लास्ट ईयर, तो टमाटो की यील्ड जो है लास्ट ईयर काफ़ी कम आई एन सिंध में। क्यों कम आई? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर हायर भी था और लोअर भी था इन सेम मंथ्स। तो सिंजेंटा हैड अ पार्टनर टूल मेटा ब्लू, एक वेदर की है, उसमें हमने उनको दिखाया कि जी ये सीड के इशू नहीं है, सीड रेट के इशू इज़ कि हमें क्लाइमेट रिजिलियंट प्रैक्टिसेस चाहिए और स्मार्ट, जिसमें the ICTs come into play, the technology providers come into play, people like जिसने लोगों ने यहाँ पे सेशंस दिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। बाखबर किसान ने भी बताया कि जिनकी रीच है, जो आउटरीच फार्मर को बताएं कि जी ये क्या आगे चीज़ें आ रहे हैं। लास्ट वीक वी वर इन नॉर्थ शरीफ यूनिवर्सिटी, तो एक वीट की उन्होंने ऐसी वैरायटी डेवलप की हुई है जो कि एक पानी पे फसल देके खड़ी होगी और फॉग एब्जॉर्बेंट है, क्योंकि वीट जब आपके विंटर में लगती है फॉग एब्जॉर्बेंट, तो पानी की किल्लत आ गई। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, फार्मर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं रही। अगर सिंजेंटा की मैं बात करूं, सिंजेंटा हैज़ ओवर 150 ईयर प्लस हेरिटेज। अगर आपको सिंजेंटा का नाम सुना तो कुछ लोग सीबा गायकी या पॉलिटीन सीड को जानते होंगे। 28,000 प्लस हमारे ग्लोबली मुलाजमीन हैं, 120 प्लस हमारी R&D साइट्स हैं। सो वी आर हेयर टू हेल्प आउट पाकिस्तान, दैट्स वाई आवर एंटायर टीम इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर एज वेल, कि हम हेल्प आउट कर रहे हैं पाकिस्तान की GDP में भी, एग्रीकल्चर में भी, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ फार्मर्स में भी। That's it from my side. Thank you, Faizan. I think you have very clearly pointed towards the package of support that farmers needs. थोड़ा सा अगर आप ऑडियंस के साथ शेयर कर लें कि इंडस्ट्री के अंदर what are the changes that you see with regard to collaboration or digital technology के हवाले से, what digital technologies you or other companies like yours are using? देखें, वेरी हैप्पी टू शेयर के जिस तरह इन्होंने एक प्री ब्रीफ भी शेयर किया, तो बड़ा कॉन्सेप्ट रेज करा फार्म टू होम मार्केट का जो है। सिंजेंटा इटसेल्फ इज़ वर्किंग विद वैल्यू चेन प्लेयर्स एज वेल। हम फौजी फ्रेश एंड फ्रीज के साथ काम कर रहे हैं, और वो हमारे जितना भी स्वीट कॉर्न हो रहा है, जो आपको टिन में कॉर्न मिल रहा है, वो कहते हैं कि आप हम जितने आपके फार्मर्स हैं सारों से हम खरीद लेंगे। इसी तरह फार्म टू होम में अभी बहुत से कंपनीज आ गई हैं, जिसमें आपके ये वन ऑफ देम इस्ताज़ा, जिस तरह ये अभी आपने देखा रीप एग्रो वाले आए थे जिन्होंने स्वाबी में काम किया। एंड देन हमारे पैनल पे जैन भी बैठे हुए हैं, देयर इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कि आपको वेदर बेस्ड इंश्योरेंस और सारी चीज़ें दे रहे हैं। प्लस देर ऑल्सो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के फार्मर की प्रोड्यूस राइट टाइम पर राइट जगह पे पहुंचे, तो वो इवॉल्व कर रही है। सिंजेंटा इज़ वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट कि हम ऐसे प्लेयर्स के साथ पार्टनर कर सकें जिसमें हमारे फार्मर की प्रोड्यूसेस जो हैं वो मार्केट के साथ लिंकेजेस इस्टेब्लिश हो सकें, उसको राइट टाइम पे उसका क्रॉप जा सके। वन ऑफ द गैप्स आई सी इज़ ऑल्सो स्मॉल फार्मर के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, वन ऑफ आवर वाटरमेलन वैराइटीज़, वो ऑगस्टा इज़ द नेम, वो इज़ गॉट अ वेरी हार्ड जो उसकी ना शेल है, तो वो 10-10 दिन जो भी अगर पड़ा रहे तो उसको कोई ख़राबी उसमें नहीं आती। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर एज वेल के फॉर सम पीपल हियर के every fourth watermelon and every third tomato in Pakistan produced is Syngenta. So that's the kind of footings we have in our market. So इसमें अभी जितने भी players आ रहे हैं, इनमें इनको link up करना है relevant industry के साथ, but linkage करने से पहले क्या है, farmer की capacity building. One of the thing is कि लोग resilient हैं कि हम hybrid seed नहीं लगाएंगे। साइकिल का स्टार्ट किधर से होता है? अगर मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 450 बिलियन की मार्केट है फर्टिलाइज़र की, 100-150 बिलियन की पेस्टिसाइड्स की, एंड देन फिर कोई 50-60 की जो है सीड्स की। तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रोवाइडर है कि सब स्टार्टिंग पॉइंट आपका सीड होता है, बट फार्मर्स आर रिजिलियंट के जी हाइब्रिड सीड जो है ये तो कहीं मेरे सॉइल को तबाह ना कर दे, मैं तो सस्ता मुझे मिल रहा है, मैं तो ये हाइब्रिड नहीं लगाऊंगा, मैं तो open pollinated variety लगाऊंगा. So capacity building along with the linkage of the players and access. So to me these are the solution points. Thank you so much, and I think you have touched upon on very important elements. Overall, very good discussion. The key areas that we take from your discussion is the use of technology that can bring change. जैसे आपने कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात की, फार्म टू होम का जो कॉन्सेप्ट है in terms of more direct access to the market. Now I'll go to Madam Wajiha with respect to access to finance, which is the bloodline for any value chain. And in the agriculture sector, I think this is one of the weakest area. So how do you see the use of digital technology in terms of access to finance, especially for the smallholder farmers, remote areas and marginalized farmers?
Thank you. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोज़ीना सालेहा है और हम Is it better now? Okay. So we have been working with farmers in Rahim Yar Khan and Twin Cities of Sahiwal and Ukara, and our observation, we work mainly in drone technology, where we are, providing the instant spraying services and crop health monitoring solutions to the farmers. We believe that technology can play an important role while with the help of predictive models and all these drones and mechanization, which is currently lacking in our current system in Pakistan. As your question is, access to funding or financial, because we feel that there is a huge gap because there is a lack of awareness. The farmer is illiterate in Pakistan, mostly. A very small farm holder is very illiterate. They want some sort of communication in their own language, very customizable model, a very simplified approach which they can understand basically. And, they don't want to be in a continuous debt situation. They want to earn through their lands, but you need to have a big, look at the bigger picture where nobody is talking about the health of the farmer, the safety of the farmer, about how technology can help them to take better decision, how the big companies like Syngenta can play their role for to help small startups like us to to be an aggregator where they can spread the information to the farmers. So we believe that there is a lot yet to be done, and since we are just 10 years away from the climate adversity, because we used to have 5,300 metric ton cubic meter water, and now we are somewhere around 1,017 metric cube water. So water levels are getting down. How the melting points at upper glaciers are working, we need to have a closer look on that, and educate the farmer who is very naive. And cannot, comprehend the impact which he's going to face. With the prediction model, he cannot see, but you can foresee the future. So how you can help them, that's the biggest challenge. Sir rightly said that farmers are reluctant to technology. Yes, they want everything free of cost at first place. They want to try these things at first place, build their own trust, and then utilize in their own crops. So how you are going to do that? Not a single company can do that. Not a single company. So we should all be more open for collaboration and more open to share the knowledge with each another, to help each another, so that we can ultimately, help the farmer, who is our buyer of our services as well, and who is the backbone of this country as well. So. Thank you so much. एक और approach जो कि which can also be viable is to actually encourage youth, and youth has this drive to accept and embrace technology. So what do you think, how do we promote youth in agriculture and in the value chain, not only in the production but also upstream जो value chain activities hai? We have seen the industrial boom in 80s and 90s in Pakistan, right? After that, the generation whom we call millennials basically have considered this thing that a farmer is someone who is, not very well educated, not earning well, and not, living in a village life, do not have access to, basic life facilities like education, like electricity, like other facilities, internet. So
the child of the farmer, the next generation of farmers are reluctant to join their own, legacy of their fathers and forefathers. But if you look closely, more than 24 million people around in Pakistan are engaged somewhere in direct and indirect farming, businesses and access to market businesses. But how you can, how you can, encourage them or force them to join agriculture? You need to bring technology and some sort of digital play where, it fascinates them more to join in, and it looks like something very modern they are doing and earning well. You have to work on the margins of the farmer. You have to, put the money into their pockets so that they can, think big and help other farmers as well to, elevate their lifestyle. So I believe that's how we can. Thank you. I think very good point with respect to incentivizing and making more attractive the agriculture sector for the youth, and technology offtake would be much more bigger than today if youth would be engaged in agriculture sector. Going towards the other important area, which is the resilience building with respect to climate, economic, and also now we aid health. After pandemic, COVID pandemic, we are adding increasingly health hazard as a risk factor to the sector as well. So I'll go first to Zain from Asia Insurance, and would like to invite him to deliberate on how collaboration can actually happen in this area, and what are the key actually barriers, bottlenecks for the offtake of insurance and other products in agriculture value chains. Thank you very much. I'll start by saying कि इंश्योरेंस की एक इमेज आप कह लें पाकिस्तान में, या उसकी एप्लीकेबिलिटी भी ज़्यादा इस तरह रही है कि लोन लेना है तो इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी. इट्स नॉट समथिंग जो आप प्रोएक्टिवली जाते हैं कि जी मैं इंश्योरेंस लेता हूँ रेगुलरली अपने कारोबार के लिए या अपनी सेहत के लिए, जैसे भी हो, और लोन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो इस परसेप्शन का एक तरह से ये होता है कि हमारा जो डिमांड साइड जब हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखते हैं वो स्क्यू हो जाती है कि हमें सिर्फ ऑलरेडी फाइनेंस्ड या ऑलरेडी लोन्ड आउट लोग ही आते हैं हमारे तक फनल में. सो नॉन लोनीज तक हम पहुँच ही नहीं सकते. अब ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस आज भी बात हो रही थी कि जी एक्सेस टू फाइनेंस कैसे बढ़ाना है और लोगों तक कैसे पहुंचना है जो लोन्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे या एलिजिबल नहीं होंगे, एंड ऑल्टरनेटिव व्यूज़ या ऑल्टरनेटिव चैनल्स कैसे लें उनकी फाइनेंसिंग के. तो हम तो उससे भी आगे का लोग सोच रहे हैं कि जी आपने जब उस तरह की फाइनेंसिंग करनी है उसकी बैक पे इंश्योरेंस आप कैसे लाएंगे. हमारा फोकस नेचुरली उसकी तरफ है. मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और जिसमें हम लोग भी अभी काम कर रहे हैं, कि इंश्योरेंस को एक्सेसिबल ज़्यादा कैसे बनाया जा सकता है. अगर इंश्योरेंस को सिर्फ इस तरह समझा जाए कि जी इट इज़ कैश टुडे और कैश टुमारो, कि आज मैंने प्रीमियम दिया कल को क्लेम आएगा तो मैं यही पैसे वापस ले लूँगा, इसका कोई मल्टीपल, तो वो ज़रा सा इनकरेक्ट है. उसकी एप्लीकेशंस पे हमें काम करना है, और जहाँ हम काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे कैश से आपने करना क्या है वो भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी का हिस्सा बन सकता है. एज एन एग्जांपल फैज़ान ने भी मेंशन किया, हम लोगों ने वेदर इंडेक्स की प्रोडक्ट लॉन्च की है. उसके अंदर हम ये सोच रहे हैं कि उसकी एक एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ जस्ट दिस कि जी आपने प्रीमियम दिया, हैवी रेन्स हो गई या एक्सेस टेम्परेचर हो गया और क्लेम मिल गए, उसकी जगह आप ये क्यों नहीं कर लेते कि आप एक अच्छी क्वालिटी सीड सप्लायर, अच्छे क्वालिटी पेस्टिसाइड सप्लायर के साथ लाइन अप करें. अगर ऐसा हादसा हो जाता है, वी पे एंड गेट यू डिस्काउंटेड पेस्टिसाइड एट दैट टाइम. आपने भी पेस्टिसाइड ही खरीदना है जाके एज अ रिस्पॉन्सिबल फार्मर. तो इस तरह वैल्यू चेन्स में ये चीज़ें भी मल्टीप्लिकेटिव एक इफेक्ट ला सकते हैं कि अगर आपने शुरू में, फैज़ान साहब बैठे तो मैं सिंजेंटा का कहता हूँ, अगर आपने शुरू में सिंजेंटा की सीड लगाई है एंड रेन आ जाती है आपके अभी फ्लावरिंग पीरियड से पहले, तो आपका एज अ रिस्पॉन्सिबल फार्मर भी इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि मैं सिंजेंटा की सीड से ही रिप्लेस करूँ, नॉट कि मैं जाके उस वक्त व्हाटएवर चीपेस्ट अवेलेबल है क्योंकि लॉस हो गया है तो मैं अपनी यील्ड को डाउनग्रेड कर दूँ. उस केस में हम इस तरह के पार्टनर्स के साथ काम करना चाहेंगे कि आप अपने फार्मर्स को वो सीड रिप्लेस करके दें एंड द इंश्योरेंस कंपनी फुट्स द बिल और एटलीस्ट पार्ट ऑफ द बिल. लाइकवाइज जब आगे जाके पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है तो हाई क्वालिटी पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो ताकि एंड में फार्मर को उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब बेस्ट प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट करेंगे.
तो ब्रिंगिंग इट बैक टू द वैल्यू चेन, मैं ये कहूँगा कि आपने उसके मल्टीपल फीचर्स बताए थे जो वैल्यू चेन में होते हैं. आई वुड से एक और क्रिटिकल बहुत जो फीचर है वो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है. टेक्नोलॉजी हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है इन दिस सेंस, आपने भी जिस तरह कहा मुफ्त मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मगर करना हर कोई चाहता है. देयर नो वन इज प्रिंसिपली अपोज कि जी नहीं हम ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, हमने हाथ से ही करना है, या हमें सीड बस वही चाहिए जो हमारे बावजदार इस्तेमाल करते थे, हमने ये वाले नहीं इस्तेमाल करेंगे. खौफ उसमें सिर्फ ये होता है कि जी अगर यील्ड ना आए या अगर कोई और नुकसान हो जाए तो क्या बनेगा. एंड दैट्स वेयर आई फील कि इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ हम कोलैबोरेट करना चाहेंगे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऐसी बने कि जी आपको वो खौफ करने की जरूरत नहीं है कि अगर ये चीज़ ना कामयाब रही तो क्या होगा. इंश्योरेंस कंपनी विल स्टेप इन विद यील्ड इंश्योरेंस और विद वेदर इंडेक्स अगर कोई एटमॉस्फेरिक चीज़ें हो जाएं. तो इस तरह की चीज़ों में कोलैबोरेशन से ही प्रोडक्ट्स निकलेंगी. वो हम भी इंडिविजुअली नहीं कर सकते कि जी हम सीड्स लेके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते फिरें, या हम पेस्टिसाइड लेके या फर्टिलाइजर या जैसे भी केस उसका हो. तो वो इकोसिस्टम में मिलके ही चीज़ें सिर्फ होंगी. एंड दैट्स हाउ वी कैन. आई वुड लाइक टू ऐड कि हम कस्टमाइज्ड ड्रोन्स देते हैं फार्मर को, और एक फार्मर जो अपनी क्रॉप के लिए ड्रोन लेता है वो कहीं ना कहीं 8 लाख से 16 लाख के दरमियान उसकी कीमत होती है डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हिसाब से. तो क्या फार्मर हमें कहता है कि मतलब अपनी सादा जुबान में, मैडम इसकी गारंटी क्या है कि ठीक अगर टूट गया तो कौन करेगा, मेरा तो 8 लाख डूब जाएगा. तो दिस इज समथिंग वेयर वी से कि अच्छा आप इंश्योरेंस कहाँ से ले सकते हैं, आप ये कहाँ से ले सकते हैं, आपकी इक्विपमेंट इंश्योर्ड है तो आप उसको यूज़ करें. अच्छा फाइनेंसिंग के बारे में आ जाता है कि वो कहता है कि अच्छा मेरा ब्रेक इवन आ रहा है अच्छा 3 सीज़न में, तो मैं 3 सीज़न में इसके ब्रेक इवन पर आ रहा हूँ तो मुझे कोई लोन दे दे. तो आप क्या है टेक्नोलॉजी अडेप्शन भी है और साथ जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उनका रोल भी आ रहा है. हम बिकॉज वी आर हमने देखा कि चाइना से और इधर उधर से इंपोर्ट करना पाकिस्तान में ड्रोन को, एग्री ड्रोन को बहुत बड़ा चैलेंज है, और फार्मर को तो समझ ही नहीं आती कि इंपोर्ट सर्टिफिकेट क्या होते हैं और ये वो. तो हम यहाँ लोकली उसको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पर सर ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी प्रोडक्ट्स लाने की ज़रूरत है जहाँ पर फार्मर टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना सीख ले विद दैट फेथ कि मेरी बैक है, समवन इज बैकिंग मी विद दैट थिंग. Thank you. I think very important points emerged from the discussion. I'm very glad. And I hope that the participants are also glad to listen, enjoying and agreeing with us. दो collaboration जो आपने mention किए, जो very you have clearly mentioned. One embedded जो insurance है with financial products, and also the possible or potential collaboration with private sector जो कि product के साथ उसको embed किया जाए. My question goes to Nayyar Saab from Salam Takaful. Do you see any other collaboration, especially with the state, for example, policy level, regulatory जो intervention या government की के साथ कोई collaboration in order to scale it up, क्योंकि insurance is there, we see it and it is gaining momentum, but to scale it up and to have it as a stand-alone product in the market to build resilience of the smallholder farmers, but not only the farmers but also the other value chain actors. ये जो आड़ती अपना प्रोड्यूस ख़रीदते हैं, वेयर हाउस में जो लोग उसको स्टोर करते हैं, and then transportation के दौरान जो within the country, export में तो जाहिर है that's compulsion, but Nayyar Saab, would you kindly elaborate on some of the additional points? Over to you. Thank you very much. Actually, I think इसमें there are certain actions which I think the government has to take. गवर्नमेंट ने आपको सबके में हुआ कि नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी लॉन्च करी थी 2014 में. तो उसके अंदर एक जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम वाज टू प्रोवाइड द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एट अ नेशनल लेवल टू ऑल द फार्मर्स. उस पर गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कमेटी भी फॉर्म करी एंड दैट स्कीम हैज़ बीन डिज़ाइन एट द लेवल ऑफ SCCP. बट आई थिंक उस स्कीम को जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि फार्मर्स जो है जैसे हमने कहा कि पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा जो है वो स्मॉल फार्मिंग है. फार्मर्स दे कांट एक्चुअली अफोर्ड टू पे द प्रीमियम्स, सो दे नीड सर्टेन सब्सिडी ऑन द प्रीमियम बेसिकली. So I think the first step which is needed is the introduction of a national level crop insurance scheme.
What the government has so far done through State Bank is that the crop loan insurance scheme in 2008 and 10, but that basically has been drawn from the lens of the financing point of view, from the bank's point of view. That it just covers the exposure of the bank. It doesn't cover the loss of the farmers. And there are certain other improvements which can be done in that scheme. For example, that scheme caps the maximum the claim which can be paid to 3%, 3 times of the total premium. So I think एक तो जो वो जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को स्कीम लानी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आप एक मास लेवल पे चेंज नहीं आ सकता बेसिकली, यू नो. आई थिंक जैसे एशिया इंश्योरेंस भी पायलट कर रहे हैं, हम भी पायलट कर रहे हैं बेसिकली. बट द अल्टीमेट क्वेश्चन लाइज के हु इज गोइंग टू फंड द प्रीमियम, बिकॉज the farmers, I mean, especially the small farmers, they can't afford the premium. Yeah. So these are, I think, two things. Thank you, Naya Saab. Maybe let's go to the audience, the participants, if there are any questions, and then we will have a final round of deliberation. Yes, please. My name is Khalid Riaz. I'm taking the last comment that was made. Who is going to fund the premium? In this country, we have a long history of government support for agricultural products. You know, Agriculture Prices Commission now is called Agriculture Policy Institute. There is a lot of money that government invests in commodity operations. This is one of the largest heads of expenditure in agriculture. So what we need to do is that we need to do away with government physically handling the commodities, and because the idea is to provide support price or support to the farmers to mitigate the risk at harvest time and so forth. So if the insurance can step in and mitigate some of those risks, then the money that we save from agricultural commodity operations can be vectored into this kind of subsidy. Thank you. Yeah, it's a good comment, yeah. Yes, please. Thank you. Sir, just a suggestion. Recently came across a research done by Columbia University and University of Zurich. And they did it, I think, for some parametric insurance company in some of the developing markets. And what they tried was, instead of asking the farmer to pay, so they did a series of experiments. So जो पहला experiment था उसमें उन्होंने farmers को कहा कि आप upfront pay करें, I think 4 to 5% of the input cost as insurance against different climate abnormalities. And the uptake was 5 to 6%. And then to another group, they offered pay at harvest. So you get insured upfront, but at the time of getting your sale proceeds, you pay for it. Unless there was a calamity, then they pay you right the next day or within a few days once a climate catastrophe happens. So the uptake was 72%. So I think there are plenty of insurance providers here. I think this was a great insight. That we see similar models here in Pakistan. Thank you. Any other question? I'd like to speak to that. बिल्कुल आपकी बात सही है. इस तरह की स्टडीज़ हमने भी देखी हैं. And definitely farmer के लिए जो हमारी assessment है उसमें है कि it's not just a case of affordability in terms of rupee value, currency value, whatever. Liquidity का एक issue है कि when do they have the money available? That is almost equally, probably more important. तो जो आप कह रहे हैं उसने 100 रुपये अगर आज देने हैं versus के 6 महीने बाद जब harvest हो गया है and he's seeing either some income come in or income has already come in, तो वो 100 रुपये की affordability में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. The 4% and 72% जिसकी आप बात कर रहे हैं. I agree. The problem we face as insurers, I speak for myself. I don't know Salam का इसमें experience क्या रहा है. The challenge we face is sort of similar to what financiers face, which is कि recovery कौन करेगा उस premium की. So it is about, like I said, ecosystem की एक बात है. If we have aggregators who can facilitate that, product बन जाएगी. The product exists, जिस तरह आपने उस study में देखा है. It is about working together and finding us a way to solve that problem. Because it's, in that sense, it's an insurance company problem, not a product problem. Product exists, product is there. हमें अपने context में उसको apply करना है.
and we need these partnerships to make that possible. वरना बिल्कुल आपकी बात सही है, इस तरह की products roll out होनी चाहिए if we're all able to sit in a room and work together. बिल्कुल. Would you like to reflect on the second point, which is correcting the subsidy regime? I think it's one of the most important element within the agriculture value chain. And Yes, it has been rightly pointed out, not only in this area, but in other areas as well. We have to correct the subsidy, how it is managed, administered, and where it is applied. So perhaps, as you mentioned in your deliberation, that जो premium है उसका government can play a role. So do we see anything in that direction or उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? I think इस पे government has started the work. जैसे मैंने बताया कि Ministry of Commerce ने committee form की थी 2017-18 में regarding the National Crop Insurance Scheme. So then SCCP worked with the insurance sector to develop that scheme. And I think the scheme has been finalized, but now government has to take that scheme and decide about the subsidy amounts. Yeah, so I think the work is going in that direction, and the policymakers need to actually execute that. Yeah. Thank you. Any other question or comment? I think the comment would be that please close the session so that we go to I hope we have not put you all to sleep. So we are doing that. So just a quick round of discussion we would like to, I would like to facilitate, and that is with regard to the final takeaway from your own experience with respect to collaboration. Just one recommendation per panelist, and we start from Madam. So your recommendation in terms of collaboration, how collaboration can actually facilitate scaling up Agritech for value chain development? Look, the bottom line is that no one can handle the whole value chain altogether by themselves, you know. So, so we all are the missing pieces of the bigger puzzle. So how we can, you know, collaborate. So we have to come together. So we all need to come together. Okay. So Zain Saab? Ani, bilkul, I agree completely. We have to connect the dots, and it's not even that, for example, if the 3 of us here or the 4 of us here sit together, we can find a solution. There's more ecosystem players out there. And I'm glad we're having events like these, जहाँ इस तरह की बातें हो सके, इस तरह की गुफ्तगू भी हो सके, तो वो तो शुरुआत की होती है. And यहाँ से ही जहाँ भी branch off करें, क्योंकि problems भी बहुत ज़्यादा हैं और solutions भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें वो मिलकर ही मिलना है कि कौन सी वाली सही solution है सही problem के लिए. Thank you. Over to you. Yeah, I think for us, it's 2 things. Be bold, be brave. आप 5 चीज़ें करेंगे, 5 में से 3 गलत भी हो जाती हैं, 2 सही हो जाती हैं. वो 2 सही इतने फार्मर की वेलबींग कर देंगे कि आपकी इकोनॉमी को इतना बेहतर इफेक्ट आएगा और उस सोसाइटी में वो रिपल इफेक्ट की तरह मूव करेगा, and it will follow on. So be bold, be brave, learn to take risks. That's my advice to everybody कि जी हम उसमें एक साथ मिल के करें. जिस तरह गवर्नर साहब ने भी स्टार्ट में बताया, इशू इज़ नॉट द क्रेडिट. हमारे पास डिसबर्समेंट भी है, हमारे पास फंड्स भी अवेलेबल हैं. इशू इज़ कि शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस. आप अगर रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, अगर आप जो हैं शेयर करते हैं किसी चीज़ें, इट विल बेनिफिट यू एज वेल. आपका शेयर ऑफ पाए कोई ना आपको छीन के लेके जा सकता है, बल्कि आपका बढ़ेगा ही इफ़ यू शेयर द प्रैक्टिसेस एंड बी बोल्ड. जी एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक तो मेरी रिक्वेस्ट They already want to conclude. एक्चुअली मेरी एक तो रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान फंटेक नेटवर्क से कि आई थिंक देयर वाज अ वेरी यूजफुल डिस्कशन थ्रू आउट द डे. I think I hope it will be recorded somewhere and it will be sent to relevant policy makers, I think. And second thing again on the collaboration is that since the market is so huge actually, currently actually I think there's no competition. So the more we work together, I think the more we can capture the market here. Yeah, thank you so much. First of all, I think I will, I really enjoyed the discussion, and very fresh views have come to the surface.
I think collaboration cannot be denied, and as Madam mentioned, we have to come together for the greater cause of transforming agriculture value chain, because it is not only important for the farmers, but it's equally important for all the stakeholders, including private sector, manufacturing concerns, and the consumers alike. With better value chains, we can afford better food, safe food, nutritious food for the consumers, and especially for the poor segments of the society. Another important point that has emerged is the correction of the subsidies and how actually subsidies can be used to develop markets for innovative products, technology, and also the package of services that farmers need. And last but not the least, policy and regulatory instrument also has to be used to nurture this collaboration and this development in this new area. So with this, I would like to thank the panelists for speaking their mind, sharing their experiences. In addition to that, I will congratulate the organizers, the Pakistan Microfinance Network and the Pakistan FinTech Network. And as Nair Saab mentioned, this deliberation and the documentation has to be made available to the policymakers and also to the other stakeholders. Lastly, thank you all the participants for listening to us at this very critical juncture between now and Iftari. Thank you so much. I want to make one comment, sir. Sir, regarding the collaboration, because in this session we just have talked about the collaboration, so I just want to re-emphasize, as our chairman has just shared with all the audience, that this is the first session we have arranged, and now we are planning to move on to have it yearly. And we are making a separate working group for the agriculture value chain to come with us as members, and then obviously we will form a committee out of those, and that committee will work obviously for the development and for the collaborations because that is very vital and very important for us to move on with. So this is one of the announcement I wanted to make because obviously this is also commented by our chairman. Thank you. Thank you all panelists. Maybe a round of applause for the panelists as well. Well, thank you so much everybody. आप लोग please आ जाइए, आपकी एक picture हो जाए. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Afida Mohammed, Mr. Sayyid Nair Hussain, Mr. Faizan Siddiqui, Rosina Soleha, and Zainul Haq Qureshi. Thank you so much. अच्छा जी, ये जो है अब इख्तितामी वक्त आ चुका है, तो मैं इस वक्त यहाँ पे बताना चाहती हूँ क्लोजिंग सेशन है, और इस क्लोजिंग सेशन में हम एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज देखेंगे मिस्टर आमिर खान का, चेयरमैन SECP. तो इनका जो रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज है, प्लीज़ उसको ऑन एयर कर दीजिए. This is Zain Qureshi from Asia Insurance. We believe firmly that agriculture is the present and जी, मिस्टर आमिर खान का जो है वो अपने रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो ऑन एयर करना है. चेयरमैन SECP.
Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. At the outset, I would like to commend the Pakistan FinTech Network and the Pakistan Microfinance Network for jointly organizing this conference and for their continuous endeavors in promoting digital financial solutions and inclusion in Pakistan. This conference is a very timely endeavor, as agricultural technology is a fundamental element of sustainable growth. In Pakistan's context, this is increasingly relevant given our large population size and being one of the countries vulnerable to climate change, both of which necessitate use of innovative solutions to ensure scalability, sustainability, and efficiency of the agriculture value chain. In this regard, today, I will focus on 3 areas. Firstly, Agritech and what it entails. Secondly, what has been achieved so far and the contribution of SCCP in this regard. And finally, what needs to be done going forward. Agriculture is the lifeblood of Pakistan's economy. It contributes 20% of the GDP and employs 38% of the total labor force. Like any developing country, Pakistan's economy is profoundly dependent on the agriculture sector in terms of generating employment, ensuring food security, and supporting a healthy balance of payments. With over 50 million acres of land under cultivation and population of 228 million and rising, food security is increasingly becoming a major concern. And according to estimates by the United Nations, in order to meet food demands of the growing population, economies must endeavor to double their agricultural produce and output by 2050. In order to match the rising demand, we have to holistically review and address the challenges faced by the agriculture sector in Pakistan. Lack of access to formal credit and minimal use of technology, coupled with the risks associated with and posed by climate change, are some of the key issues that we are facing today. As institutional sources of financing remain fragile, farmers are forced to rely on informal money lenders and middlemen for meeting their credit needs. These unregulated channels expose small farmers to exploitation, not only in terms of higher interest rates, but also because these lenders exercise control over what farmers plant and how they plan their crops. As per estimates, these informal credit sources account for 78% of the total credit to agriculture sector, and the balance followed by banks and other formal institutions. With banks shy of lending to small farmers and other value chain players, farmers' access to institutional credit remains limited and challenged. The lack of access to credit has negatively impacted farmers' ability and capacity for the use of improved technology and improved inputs, which in turn has led to the creation of a substantial gap between the potential and the actual crop productivity. To overcome these challenges, the marriage of agriculture sector with technology is the need of the hour. Given the receptive attitude of regulators towards fintech, a high teledensity, a high internet penetration level, and improvements in electronic payments infrastructure, there is a massive potential for the agri market to flourish in Pakistan. But for that to happen, the domestic market players have to embark on a journey towards Agritech in a meaningful way by understanding the demands of small farmers and supporting them to scale up their value chain. And as we have already witnessed in the case of microfinance sector and consumer credit, technology can play a decisive role in improving access to finance to the grassroots level. As COVID-19 lockdowns have shifted the mindset of consumers, the acceptance of virtual and digital interactions has also gained a lot more traction than what it used to enjoy. In keeping with the times, SCCP has been continuously striving to create a conducive regulatory environment and has actively encouraged market participants to innovate. Here I would like to highlight some of the recent initiatives SCCP has taken to expand the role of agriculture sector-related technology solutions in Pakistan. Firstly, simplifying the requirements under NBFC regulatory framework to provide flexibility for fintech-based business models has enabled establishment of NBFCs focused on agricultural credit. I am pleased to share with you that some prospective investors have already approached us for setting up
fintech-enabled NBFCs for providing customized loan products specifically designed for farmers. Secondly, SECP has introduced Collateral Management Companies Regulations 2019 to promote the concept of warehousing of agricultural produce. It has also paved the way for electronic warehouse receipt, or EWR, which is transferable and tradable at a futures exchange and can also be pledged with financial institutions to obtain finance, thus enabling small farmers and depositors of agricultural products to access formal financial services. At the same time, this will address the problem of wastages and losses incurred due to the inadequacies in shortage of commodities after harvest. Thirdly, in addition to the traditional agricultural insurance products and the existing government-sponsored crop insurance schemes, the SECP, under its Regulatory Sandbox initiative, has also approved parametric insurance solution for live testing. So far, 61 farmers of the wheat crop in the district of Rahim Yar Khan, covering an area of 168 acres, have been covered in the pilot phase. As you are aware, parametric insurance provides protection to insured based on parameters such as rainfall or crop yield in a unit area gathered through technology-based solutions, and is particularly suitable for smaller farmers. Finally, coming to what needs to be done. When we look around the world, Agritech startups, even in developing countries in Africa, have positively transformed the agri-sector through leveraging technology. And the list of innovations is a long one. From advances in irrigation techniques, new types of seeds and fertilizers, shelf life enhancement technologies, and provision of close to real-time data about growing conditions, each idea having the potential to transform the local agricultural space. However, as I touched upon earlier, in order to benefit from the developments in technology, farmers need access to funds and customized solutions such as payments, savings, and insurance in keeping with local dynamics and needs. This is where the role of financial institutions and local startups comes into play. The SECP, on its part, has made numerous improvements in the regulatory ecosystem, not only through simplifying the establishment of startups and improving the access to finance, but as I mentioned earlier, we have also opened the door for startups to pitch their ideas for live testing in a controlled environment. I'm convinced that the future is digital, and accordingly assure you that SECP remains available to offer all and any support to new entrants, especially in the fintech and agri-tech space. In conclusion, I stand here today with optimism and look forward to your feedback as we move towards creating an enabling and conducive regulatory framework. Thank you. ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जो है वो मैं बुलाना चाहती हूँ ज़ैनुल हक कुरैशी साहब को, CEO एशिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्लीज़ आइए और आके कुछ बात कीजिए। जी जी बिल्कुल। थैंक यू जी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि अभी होके गया हूँ स्टेज से। जिस चीज़ का मौका नहीं मिला था बात करने का वो ज़्यादा था हमारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का, और टेक्नोलॉजी में खासकर कोलैबोरेशन की हमें कहाँ जगह नज़र आती हैं। उसमें मैं स्पेसिफिक मेंशन करूँगा दो प्रोडक्ट्स जो हम लोग अभी रन कर रहे हैं। उनमें से एक हम कर रहे हैं बाखबर किसान की रीप एग्रो हैं, हितशाम भी अभी थे इधर पैनल पे भी। उनके साथ हमने वेदर इंडेक्स की प्रोडक्ट रन की है स्वाबी और मर्दान में। मेन बेनिफिट जो वेदर इंडेक्स का है कंपेयर टू कन्वेंशनल जो गवर्नमेंट की क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम है, उसका ये है कि जो मैं भी बात कर रहा था, मेरे ख्याल हबीब साहब का सवाल था लिक्विडिटी के बारे में, और कि कब ज़रूरत होती है फार्मर को लिक्विडिटी की, नॉट जस्ट के वो पैसे चाहिए। एंड वेदर इंडेक्स उस चीज़ को डायरेक्टली एड्रेस करता है। हमने सीज़न ख़त्म होने से पहले 2 दफ़ा क्लेम्स पे किए थे इसमें, जब एक्सेस रेन की कवरेज थी और मेज़ वो ग्रो कर रहे थे, और 2 दफ़ा एक्सेस रेन हुई इन दैट पीरियड, और सीज़न ख़त्म होने से पहले 2 दफ़ा हमने क्लेम उसके पे कर दिए। हमारे नज़दीक और जो हमें बताते हैं रीप एग्रो वाले भी, इसकी बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन थी फार्मर्स में। ना सिर्फ ये कि क्लेम मिल गए मगर सीज़न ख़त्म होने से पहले मिल गए। तो हम ये अप्रोच लाना चाहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कि क्लाइंट्स की ज़रूरियात समझें और उसके हिसाब से जिसको हम कहते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें।
एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कहना कि जी वेदर इंडेक्स की एक प्रोडक्ट बना लें और वो बस रोल आउट कर लें या क्रॉप इंश्योरेंस को कर लें। अभी नैयर ने भी जिक्र किया था कि हमारे यहाँ अभी जो क्रॉप इंश्योरेंस हो रही है वो क्रॉप लोन इंश्योरेंस है जो कि फाइनेंस बेस्ड है और वो फाइनेंशियर को कवर करती है, एक्चुअल फार्मर के लॉस को नहीं करती। तो हमारी इंटेंशन तो है कि हम एक्चुअल रियल वर्ल्ड जो इशू है विच इज़ कि उन्हें उस वक्त पैसे चाहिए जब बारिश आ गई है या पेस्टिसाइड के लिए चाहिए, डिपेंडिंग के क्रॉप साइकिल में कब आई है, सीड्स फिर से लगाने के लिए चाहिए। तो उस तरह की प्रोडक्ट हमने फिर दरियाफ्त की है जो कि ये मसला हल कर सके। सिमिलरली हम लाइव स्टॉक में भी डिजिटल टैगिंग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा था कि क्लेम्स के प्रोसेस बहुत लंबे हो रहे थे और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क में जाना पड़ रहा था इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये हमारा वाला कवर्ड जानवर है, वाकई में मर गया कि नहीं मरा। तो अब हम उसको डिजिटल टैगिंग से चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं और क्लेम प्रोसेस जो 3 हफ्ते का था उसको 3 दिन पे ले आए हैं। तो हमारी इंटेंशन टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशंस में और बाय द वे इन दोनों कंपनीज, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में हम लोग थर्ड पार्टीज़ के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ हमारी डेवलप टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो मकसद है ये इस तरह की कोलैबोरेशंस का कि हम एक्चुअली एंड यूज़र को बेनिफिट पहुंचा सकें उनके स्पेसिफिक मसले का। सिर्फ ये नहीं कि जी हमने प्रोडक्ट बना दिया आप इस्तेमाल उसे कर लें, जो कि कई दफ़ा हम देखते हैं एटलीस्ट माइक्रो इंश्योरेंस में कि जी माइक्रो इंश्योरेंस इज जस्ट द सेम इंश्योरेंस मगर आप उसको डिवाइड बाय 100 करके बेचते हैं। ये बात नहीं है, सोल्यूशंस डिफरेंट हैं, चैलेंजेस डिफरेंट हैं और उनके लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करनी है। ओवरऑल जिस चीज़ की तरफ थ्रस्ट होना चाहिए एंड आई एम ग्लैड वो सारा दिन यहाँ यही हम बात करते हैं कि जी फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए। अपने तौर पे हम जो कर सकते हैं वो है इजी अंडरराइटिंग एंड फ्रिक्शनलेस क्लेम्स। वेदर इंडेक्स में क्लेम प्रोसेस नहीं है, इफ़ द ट्रिगर इज हिट आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आपको क्लेम फॉर्म जमा भी नहीं करवाना। डिजिटल लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का भी यही है कि आपको फिजिकली टैग वगैरह नहीं भेजना, ना किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह करवानी एंड सो ऑन। डिजिटली हम आपको प्रूफ आपसे ले लेंगे कि वाकई इवेंट हो गया। सो मैं इसी चीज़ पे एंड सिर्फ कर लेता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली भी काफ़ी ओपन हैं, API बेस्ड सोल्यूशंस हम लोग रोल आउट कर रहे हैं और हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस तरह स्टार्टअप्स के साथ काम करके भी अपनी कोलैबोरेशंस और से और बढ़ाएं क्योंकि अल्टीमेटली हमारे और एंड यूज़र के दरमियान में आप हैं, यानी फिनटेक्स हैं, डिफरेंट एग्रीगेटर्स हैं, लेंडर्स हैं और हमें वो इन्फॉर्मेशन फीड इन जब होती है तभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट मज़ेदार होती है। वरना तो हम अपने हिसाब से बैठे हुए प्रोडक्ट बना लें जो कि कहीं ना कहीं हमने पढ़ी थी कि बहुत अच्छी है मगर यहाँ अप्लाई नहीं होती क्योंकि यहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। अगेन मैं रीव एग्रो का नाम स्पेशली लूँगा क्योंकि फार्मर्स की ज़रूरत समझने में उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है और इसी तरह के हम चाहेंगे कि और भी मॉडल्स हम अडॉप्ट करें जहाँ एंड यूज़र की एक्चुअल पेन पॉइंट्स हमें समझाए जाएँ और हम एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाएं जो कि उन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करे। सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कि जी और भी हमारे साथ फिनटेक्स कोलैबोरेट करें एंड आई लीव इट एट दैट। थैंक यू वेरी मच। वेल थैंक यू सो मच सर। और अब जो है मैं बुलाना चाहती हूँ सैयद मोहसिन अहमद साहब को, CEO PMN। प्लीज़ आप आइए और आके जो है चंद अल्फाजात बोलिए हमारे साथ। Assalamu alaikum ji. So I am not standing between you and iftar. It is the time that is standing between this time and iftar. तो मैं थोड़ी सी लंबी बात भी कर सकता हूँ क्योंकि इसके बाद बोर ही होंगे नहीं तो अगर फारिग हो गए। तो मेरा ये कहना है जी, ये जो हमने ट्राई की बिटवीन आवर सेल्फ एंड द पाकिस्तान फिनटेक नेटवर्क, ये वन ऑफ द कोलैबोरेशंस है जो हम आइंदा करना चाहेंगे। सो दिस इज एक्चुअली द पर्पस वाज कि हम वी बिलीव इन दिस दैट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू हैपन इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एंड द फिनटेक सेक्टर। तो हाउ डू वी डू दैट? सो वन ऑफ द आइडियाज वाज कि हम एग्रीटेक which is because agriculture is one of the key areas for microfinance and for financial inclusion. So let's start with an Agritech conference. Iske baad, there is a lot of other options that we need to discuss and we need to collaborate in knowledge areas. And when we started this, how do we do this conference? What should be the theme and what should be the different stakeholders? तो हमने फिर एक इकोसिस्टम डेवलप किया जिसमें वी लुक्ड एट प्लेयर्स हु आर विद इन द सर्कल ऑफ एग्रीटेक एंड माइक्रो फाइनेंस and then those who are external to that, and that helped us in not only identifying के हमें किन players को बुलाना चाहिए in different sessions,
but also कि कौन से players हैं जो influence outside the industry कर सकते हैं and they can be helpful for the industry. So we were able to invite most of you for this event. मैं specifically ये बात करना चाहूँगा in terms of the event itself. So if we look at some top discussion points, so starting from जो first session था, उसमें नदीम साहब का जो point था, all the discussion should revolve around के how are we going to change or impact the income of the farmers. So that should be the bottom line of whatever we do when we are involved in this these kind of events. So that's the business model, we are social business model that we are into, whether we are microfinance sector or the fintech sector which is into the development phase. Session number 2 में जो मुझे बड़ा exciting चीज लगी, that was aggregating the smallholder farmers. So वो जो discussion थी ना जी कि so the jury I don't think is out, but for us at least it is out कि हमने काम करना है with the smallholder farmers which represent maybe 75% of the sector, though, and that is where the impact will come, and that is where finance is not there, and that is where there is information asymmetry. So we need to work with all of us together to provide services and improve the productivity of that end of the market. So I think that was a very important point in that particular session. एक और सेशन में डिस्कशन थी about the information asymmetry कि the advantage of making it of reducing the asymmetry and the costs attached to that reducing that information asymmetry, what is crisis, and before that the Azad Kashmir catastrophic fund. So that's the kind of fund we are supposed to bring. At the end, Ji, I would like to thank all the members of the Pakistan FinTech Network and the Pakistan Microfinance Network who were present over there. Our sponsors for the event, including Fatma Fertilizer, Syngenta, Bank Al Falah, Bakhabar Pakistan, and a couple of others I have forgotten. But so whoever have sponsored this, we are grateful, because as Fahad mentioned and Nadeem Saab mentioned, this is a series of events of which you were the founders in getting this done. And also the management team. They've been very busy. I know there have been some glitches on the technology side, but I can tell you, Ji, कि glitches technology में आती हैं. So that is part of being technologically advanced. So we have tried to overcome that, but yeah, it created initial problems. So thank you very much, Ji, and I think it's only another 18 minutes left, so let's hope we can have good discussion over there and then have Aftari. So thank you very much, Ji. वेल आप सब ने इतना जो है पूरा दिन आज अपना यहाँ पे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप कि आपको आज का ये इवेंट जो है, ये कॉन्फ्रेंस अच्छी लगी होगी. यहाँ पे बहुत सी बातें हुई, बहुत सी मालूमात एक दूसरे से शेयर की गई, बहुत से सेशंस हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला. और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कुछ स्पॉन्सर्स का, जिसमें फातिमा फर्टिलाइज़र्स, बैंक अल-फलाह, सिजेंटा, एशियन इंश्योरेंस, TPL इंश्योरेंस, बाखबर किसान और सलाम तकाफुल. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने जो है ताउन किया अपना, और आप जो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, उन्होंने भी ताउन किया.
सबर के साथ जो है वो सब देखा सुना और कोऑपरेट किया, तो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जो है मैं चाहूँगी कि जो यहाँ का स्टाफ है वो आ जाएं ताकि उनकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो बन जाएं और वो अपनी फोटोग्राफी कर लें यहाँ पे आके। इफ्तारी के लिए जो है वो बराबर वाले हॉल में इंतज़ाम है, तो थोड़ी देर बाद आप लोग जो है वहाँ मूव कर सकते हैं इफ्तार डिनर के लिए। ऑलराइट, इसी के साथ आप मुझे यानी कि आरजे रिमशा बासित शेख जो कि कोरोना गर्ल के नाम से मशहूर है, उसे दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपने सेकंड डोज नहीं लगवाई तो वो भी लगवा लीजिए और बूस्टर भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप इफ्तार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।